And let's get you details of a shocking incident of rape that's been reported in Maharashtra's Pune. A 26-year-old woman raped inside a state bus at Pune's busiest bus depot, and this happened on Tuesday morning. The victim was actually waiting for her bus when the accused claimed the bus was on a different platform and then followed her into that bus and raped her. The accused has been identified as Datta Gade. He was identified through CCTV footage. There are 13 Pune crime branch teams that are hunting for him. He's been confirmed as a history sheeter. Now, the NCW has also taken cognizance of the crime. The opposition questioning the law and order in Maharashtra. 26-year-old girl allegedly raped in a standing bus at Swargate bus terminal of Pune. I'm standing at the same location right now where this incident took place around 5:30 early morning. So accused falsely informed her that the bus has stopped somewhere else. Girl was preparing to go to the Satara. She wasn't getting the bus at early morning, and then accused approached her. He talked to her, and then both entered in the same bus from this route, and then he physically abused her. So the accused manipulated her, and believing him, that led her towards the stationary Shivshahi bus. It was parked in the same terminal, and upon the reaching bus, the victim realized that the bus was not in service and voiced her concern, but till then she was allegedly abused by the accused. Now 36 years old Datta Gade, he is on the run. 8 teams of crime branch deployed to hunt him down. Identification has already been done. Health is again stable of the same victim girl. CCTV is already seized. Investigation is underway. Crime branch is still hunting him. Dog squad is also deployed by the local police. But now women security concerns are again raising in Pune, and also political leaders have already started speaking on the same issues. With camera person Gopal Harne, this is Omkar Vable, India Today, Pune. तो वो बस को आप फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? यस क्योंकि वो स्पॉट है ना, एविडेंस का मतलब क्राइम का स्पॉट है बस ही, इसीलिए उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। देखिए, हमारी 2 मांगे, एक तो एज अ होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एज अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र, देवेंद्र जी फडणवीस जी ने रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के आम पब्लिक की माफी मांगनी चाहिए। उसी के साथ जो आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है, उसको तुरंत से तुरंत अरेस्ट होकर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी 2 मांगे। तो इस तरह महिलाओं के साथ में वहां पे बलात्कार होता है, बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार ये सब घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये इस तरह की घटनाएं यही तुल लेती है कि सत्ताधारी के पास में नजदीक का जो हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ढिलाई हो जाए, कार्रवाई करने के लिए दिरंगाई हो जाए, टाइम पास किया जाए। ऐसे इस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ रही है। महाराष्ट्र की जनता का विश्वास अब पुलिस डिपार्टमेंट में कम हो रहा है, तो ये बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसके तरफ ध्यान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हादसे की बात उस लड़की ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन में 9 बजे उसका कंप्लेंट दर्ज किया। उसके बाद वहाँ पे मौजूद डीसीपी स्मार्तना पाटिल होगी और पूनम पाटिल होगी, उन्होंने तुरंत एक्शन ली और जितने भी सीसीटीवी के कैमरे वहाँ पे थे, सीसीटीवी के फुटेज हो गए, उस लड़की ने बताए हुए उस आदमी के स्केचेस थे और फोटोज थे, उसके जरिए उन्होंने 8 पुलिस पथक तैयार करके तुरंत पुणे सिटी हो गए और बाकी के एरिया जहाँ भी उनको लगता है कि ये आदमी हो सकता है वहाँ पे भेज दिए। ये महाराष्ट्र में कानून कायदा बचा ही कहाँ है। इस तरह की घटना, रेप का, हम पहले इसका कंडेम करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। एसटी बस जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के अंदर आती है बस, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। मतलब किसी के दिल में पुलिस प्रशासन कायदे का डर ही नहीं रहा। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन अरेस्ट करके उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, बड़ा प्रोसिक्यूटर करके उसको तुरंत सजा दी जाए। It is very unfortunate that such an incident of assault has happened in the Shivshahi bus in Pune. Although the investigations are going on and the police will come out with its first information report, and after that only we can say what the situation was. Let's bring in Omkar Vable, who's joining us live from Pune with the latest updates on the investigation. Omkar, it's been 2 days since this shocking incident. We understand that the accused is yet to be nabbed.
Exactly. It's been 48 hours now, and still crime branch is trying to hunt him down. They already launched a search operation. Almost 13 teams. Yesterday it was 88 teams, but now 13 teams of crime branch are trying to search on different location. Search operation is still underway. Sniffing dogs are there to help them, but obstacles are still there, and police are still they're not getting exact information and the location. They're not able to trace him down. So different operations, and Pune rural police are also helping crime branch now, but it's been 48 hours. Where is he? No, the police does not have any idea. They are trying to get different clues, but they're still not getting succeeded. But the issue is, within 30 minutes of the whole incident, they tried to locate him, but still it's not happening. Accused is identified, but police have no idea where is he. Now I'm standing in a police commissionerate. Just 30 minutes ago, MOS of Home Department Yogesh Kadam held meeting with the Police Commissioner Amitesh Kumar, and now they are trying to locate different locations also. So investigation is underway, and as per the Yogesh Kadam, accused will they'll soon arrest him. All right. Thanks, Omkar, for joining us with all of those details.